हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हाउ टू डिटेक्ट डेटा फ्रॉम क्यूआर कोड यूजिंग पाइथन। ओके, तो फर्स्ट हमको इंपोर्ट CV2 करना पड़ेगा, जिससे हम कैमरा ओपन कर सकते हैं एक फ्रेम में। वेरिएबल लेंगे, कैप वेरिएबल में स्विच डॉट वीडियो कैप्चर। इससे क्या होगा, कैमरा मतलब हमारा लैपटॉप का जो भी कैमरा है वेब कैम वो ओपन होगा। डॉट वीडियो कैप्चर दूसरा वेरिएबल लेंगे डिटेक्टर। इसके अंदर क्यूआर कोड डिटेक्टर को कॉल करेंगे। इसके लिए CV2 डॉट क्यूआर कोड डिटेक्टर टाइप करेंगे तो क्यूआर कोड डिटेक्टर को कॉल करेगा। वाइल और एक बूलियन वैल्यू लेंगे ट्रू करके। उसके बाद मतलब वो फ्रेम कंटिन्यू चालू रहे इसलिए। और फिर रेट एक फ्रेम लेंगे आउटपुट रिटर्न करने के लिए, जो भी फ्रेम में हमारे कैमरे में आएगा। और IMG उस फ्रेम का नेम रहेगा, मतलब वेरिएबल। और कैप डॉट रीड करने के बाद वो पूरा मतलब जो भी इमेज है वो रीड करेगा और रेट वेरिएबल में डालेगा। रेट वेरिएबल उसको रिटर्न करेगा। अभी जो भी डेटा डिटेक्ट हुआ है वो तो कंप्यूटर लैंग्वेज में, अभी हमको ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने पड़ेगा। तो टेक डेटा वेरिएबल मतलब जो भी बॉक्स है वो क्यूआर कोड का जो बॉक्स है उसमें जो डेटा है वो डेटा में जाके स्टोर होगा। डिटेक्टर डॉट डिटेक्ट एंड डिकोड यूज करेंगे। स्पेस देना पड़ेगा, डिटेक्ट एंड डिकोड। उसके बाद हम वो IMG नाम का जो फ्रेम है हमने जो लिया है उसको स्पेसिफाई करेंगे कि इस इमेज से लो जो भी तुमको डिटेक्ट करना है।